Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to complete book exercises and question answers of chapter 15 Our Earth of your EVS book. So A is fill in the blanks using correct option. आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको 1 चूज करना है और fill in the blank में fill करना है. So 1 is Earth has a diameter of roughly. अब आपको बताना है कि अर्थ का डायमीटर रफली कितना दिया गया है. तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि द अर्थ्स डायमीटर इज रफली ऑफ 13,000 किलोमीटर. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 13,000 kilometers. Second is the earth is surrounded by a layer of air known as. को बताना है कि अर्थ जिस लेयर से सराउंडेड है उसको हम क्या कहते हैं. हिल्स, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेयर. सो यू हैव टू राइट हियर एटमॉस्फेयर. थर्ड इज the earth's atmosphere is made up of dash nitrogen, carbon dioxide and other gases. अब इसमें कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मेजर कंटेंट ऑफ द atmosphere. Question B is look at the picture and complete the word under it. आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं like this and this and उसके नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको इसकी स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है. ओके, सो फैक्ट what is this? This is a factory. So you have to write here FACTORY, factory. And this is a bridge. BRIDGE. And this is a dam. So write here DAM, dam. Question number C is fill in the blanks using the words given in the box. Here you are given with some words. You have to fill them in the following. Fill in the blanks. So first number का fill in the blanks है plain, mountains and valleys are. ये सारे क्या हैं? These all are landforms. So we will write here land forms. Second is oceans, seas and rivers are. ये सारी चीजें क्या है? Water bodies. Okay, so we will write here water bodies. Third one is the earth has more dash than dash. इसमें क्या आएगा? अर्थ पे more क्या है कंपैरिजन में? वाटर. मोर वाटर देन लैंड. ओके, अर्थ पे वाटर ज़्यादा है देन लैंड. सो वी विल राइट हियर द अर्थ हैज मोर वाटर देन लैंड. ओके, फोर्थ इज अ डैश इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. मॉडल ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट globe. So we will write here globe. Okay, fifth is we live on the. हम कहाँ रहते हैं? We live on the earth. So we will write here we live on the earth. Now T is answer the following. Here 4 questions are given. You have to answer them in the book itself. So question number 1 is what are natural things? Give 2 examples. तो natural things क्या होती हैं? Natural things are gifts of nature. नेचर का गिफ्ट्स होती हैं. For example, mountains and rivers. ठीक है, these are 2 examples of natural things. Second question is what do you mean by forest? Forest से आप क्या समझते हैं? The areas completely covered with green trees are known as forest.
ओके तो ऐसा एरिया जो कम्प्लीटली ग्रीन ट्री से कवर होता है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Question number 4 is what are man-made things? Give two examples. So first we have to tell what are man-made things. तो हम इसको पहले आंसर करेंगे. The things made by humans using natural things are man-made things. And next part of the question is give two examples. So हम यहाँ पे two examples लिखेंगे. For example, car and furniture. These two are made by man now. So these are man-made things. Now next are HOTS question and life skills question. HOTS are what would happen if earth did not have atmosphere, and second question is people are exploiting nature, how, and life skill question is what should you do to save earth. So this question I am going to show you. So these questions you have to do in your copy. So first of all you have to put date in the corner. Okay, not in this way, in this way. Then you have to put chapter 15 and the heading are earth, and right here HOTS question. Question number 1 is what would happen if earth didn't have atmosphere? अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? If earth didn't have atmosphere, life would not be possible. Okay, life would not be possible. Second question is people are exploiting nature. How? लोग कैसे नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं? People are exploiting the nature by cutting the trees and polluting the environment. Okay, ट्रीज को कट करके एंड एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके. नेक्स्ट इज लाइफ स्किल क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 is what should you do to save earth? The answer is to save the earth we should plant more trees and follow 3 R's: reuse, reuse and recycle. So हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.